Hello everyone, I am Hina and I just hope that in this tough time of COVID you all are doing well. वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट लगा मुझे बिकॉज ऑल दिस नेगेटिविटी विच इज़ गोइंग ऑन, बट देन आई थॉट कि इफ़ यू हैव टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, तो आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं यू शुड डू दैट. सो आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में ये जो मेकअप आप देख रहे हैं दिस इज़ विदाउट फाउंडेशन. यहाँ पे कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई प्राइमर यूज़ नहीं हुआ है एंड आई हैवंट यूज एनी ऑफ द काजल ऑल्सो. सो आई होप यू विल लाइक दिस लुक. आपको ये लुक पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट ज़रूर करेगा एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स सी हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस मेकअप लुक. तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में लगा लिया है क्लिप थोड़े टाइम के लिए सो दैट ये बाल परेशान ना करें. एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बायोनेक्टर. बायोटेक का है ये और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है. इसको मैं समर्स में भी यूज़ करती हूँ, इवन आई यूज़ इट इन द विंटर्स ऑल्सो. दिस इज़ रियली नाइस. इसके बाद में जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो है कंसीलर और ये कंसीलर है फिट मी का एंड इट इज़ इन द शेड 30 हनी. सो कंसीलर को जो है सबसे पहले हम ऐसे आईज के नीचे लगा रहे हैं बिकॉज आई हैव सम डार्क सर्कल्स, सो उसको हाइड करने के लिए. एंड देन आई एम गोइंग टू पुट इट हियर on my nose, on my chin to highlight it. And then I am going to use a brush. So brush की हेल्प से मैं इसको आईज के नीचे इवनली स्प्रेड कर रही हूँ. So concealing करने के बाद में the thing I am going to use is the BB cream because this is no foundation look, so I am going to use BB cream and this BB cream is from Maybelline and it is in the shade 01 Fresh. So BB cream को लेकर के मैं अपने फेस पे ऐसे डॉट डॉट की हेल्प से जो है I'll put it on my face. And don't forget to put it on your neck also, so that face and neck का color different नहीं हो. So here's my beauty blender. ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे डैप डैप करके हमको जो है इवनली स्प्रेड करना है अपनी बीबी क्रीम को. मैं अपने आईज पे कंसीलर लगाऊंगी. So after concealing and BB cream, I am going to use this compact from Swiss Beauty and I am going to put it with the help of this brush. इसके बाद में आई एम गोइंग टू यूज
use this blusher which is from Color Bar. A little bit on the nose, chin, so for the eye makeup, I'm using this pink shade which is from the Lancome Paris palette, and I'm not going to use any of the glitter or anything, just simply this pink shade. After using the eyeshadow, I am going to apply this eyeliner. So after applying eyeliner on both my eyes, I am just going to work on my eyelashes. Now I am going to put this mascara. सिंस इट्स अ नो काजल लुक, तो हम थोड़ा सा काजल लुक देने के लिए क्या करेंगे, हम मस्कारा को ही अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लेंगे. Just like this. इसके बाद में आई एम गोइंग टू अप्लाई लिपस्टिक. And I'm not going to apply a lot of dark lipstick. थोड़ा सा हल्का सा ही अप्लाई करूँगी इसको with the help of this brush. So I'm not using any lip liner here. आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं. And yes, I'm done with my lipstick also. तो जो एक लास्ट चीज़ बचती है वो है हाईलाइटिंग. सो हियर आई एम यूजिंग मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर. So I'm going to use it here on my cheekbones, on my nose tip, forehead, chin, and a bit on the eyeshadow. I am done with the makeup and hair के लिए जो है हम
Perfect.